Good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the seventh chapter. We have completed 7.21. So just a fast recap. Dear Lord is talking about how people get inclined towards Devi Devata worship. देवी देवता वर्शिप के इंक्लिनेशन का कारण क्या है? कामे स्थित ऋत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता. लॉर्ड इज क्लियरली सेइंग जो काम डिजायर कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आई वांट गाड़ी बंगला बीवी बच्चा ये वो वट एवर नेम फेम पावर ऑल्सो. कामे स्थित ऋत ज्ञानम. उनका ज्ञान चला गया. ज्ञान क्यों चला गया? क्यों? डिजायर करना गलत है? क्यों सब डिजायर करना गलत है? Then tell me, what is wrong? Yes, Priya Mataji, what's wrong if I do desire? No, something more. No. Come on. No. See, you are not understanding that. See, one thing and Bhagavatam, Mahabharata, your Ramayana, your what do you say? Anything, any scripture, any Vedas, any scripture have got very subtle science. The problem is we don't take up to that subtle science that easily. You know, in Ramayana, we all have heard that Hanumanji was not given a seat when he went to as a Shanti Dut. He had gone, and when he was in front of Ravana. So we have heard. तो उन्होंने पूंछ का बड़ा एक थ्रोन बनाया, सीट बनाया और उस पर बैठ गया. And that was higher than Ravana's seat. There is no mention neither in Ramcharitmanas, neither in Valmiki Ramayana, neither in Kamba Ramayana. But through one shloka mentioned the Valmiki Ramayana, you got to conclude that yes, Hanuman made a seat of his tail and he was sitting on the top. And what was the statement? He says, Valmiki says that Ravan was looking upwards, and he was asking Hanuman, why have you come? Who are you? Why have you come? That's where he says, I am Ramdas, Ram ka Das. When he meets Sita, he doesn't say I am Ramdas. He says I am Ramadut. But here he says I am Das of Ramchandraji, and he speaks over that. So the best part is Shastra is very subtle. बहुत गुह्य है शास्त्र, तो उसको समझना है तो आपको थोड़ा दृष्टिकोण बदलना होगा, थोड़ा गुरु के ज्ञान से या गुरु से इंस्ट्रक्शन लेके ही समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे. तो दिस वर्ड ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता. हृत ज्ञानम is saying this fool who does material gain, some business or money, car, जो भी है, that comes by law of karma. By surrendering to Devi Devatas, it does not come. Ab, just imagine a beggar like a very poor man. He starts let's say he does. Even if he does, become a money. His karmas are that. He is destined to become a money. He is destined to become Elon Musk, he will become Elon Musk. Because what is Lord saying? Nobody can beat destiny. And we are trying to beat destiny. So that is where our intention of going to Devi Devatas matters. To thank the Devi Devata, no problem. I always say, let's go to Hanuman temple and do Ramayana distribution. The focus is not Gadi De De Bangla. We are taking the ashray, the shelter of Devi Devatas. But क्यों ले रहे हैं? हमको कोई भगवत कार्य करना, ना के हमारा पर्सनल कार्य.
So that is where it matters. That's why this shloka says, कामे स्थित ऋत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता. यही काम था ध्रुव महाराज के अंदर. ध्रुव महाराज had the same desire. He wanted a kingdom larger than his grandfather Brahma ji. So he also went. He also took the guru's advice. Go to Madhuvan. ये बात अलग है. तो वो दिया. He is not incapable of giving. Ramchandra is not incapable of giving. Krishna is not incapable of giving. All the avatars of Narayan are capable of giving. But what you deserve as per your law of karma, what you deserve. If you think, नहीं मैं वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, शॉर्टकट फटाफट नहीं हो. Your focus should be more on giving. Because that talks about eternal. Yes. Now today's verse, yes, unto Kolam patience of Rohit, unto Vedasam. That verse talks about the temporary nature of what you're going to get from giving. Second, Devi, I've always said n number of times, Devi Devatas have to be respected. They should never be disrespected. But you should not surrender to them. उनके शरण में नहीं जाना है. देवी देवताओं का आदर सत्कार और उनका आशीर्वाद भी लेना है, अगर उनको सरेंडर नहीं करना. Now how do we understand this? Again with the example of Rama. In Sundarkand, Hanumanji had gone to Lanka. He reached in the evening. Till next day morning, he is searching for Sita, and he is not getting. And there is a beautiful sloka in the Valmiki Ravani Sundarkand. कहते हैं अगर आपका कोई खाना गुम हो गया, you recite that sloka, the bright chances that you will get the thing. But Hanuman had gone to search something, was so he goes, and there he's wondering, I searched like there is no place in Lanka which I have not searched, but I have not got Sita. सब जगह ढूंढ लिया, तो कहीं मुझे सीता माता नजर नहीं. Where did I see? Where did I see? Where did I? What it is? I. What is the highlighting word here? Immediately he remembers, oh, my mistake. So immediately he recites from Shloka. It says that I surrender to all देवी देवता, वरुण देव, अग्नि देव, वायु देव, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान का कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना. He sees Sita Maiya in Ashirwad. So what does this mean? What does this mean? So if you want to implement any seva of the Lord, you got to surrender to Devi Devatas also. You cannot bypass. You cannot bypass them. It's like simple. I know the principal of the school. I don't want to talk to the teachers of the school or the office bearers, post bearers. भले आपका प्रिंसिपल तक पहचान है. You are working somewhere, you know the MD जो भी हो, अच्छा रिलेशन also post bearers. That's why Lord is first saying, Kame stated, Manam Prapadyante, and the अन्य देवता के पास जाके क्या करते हैं? यो यो यम यम तनुम भक्त्या श्रद्धया अर्चित इच्छति.
तस्य तस्य अचलम भक्त्या श्रद्धाम ताम एव विद्याय हम, saying यो यो यम यम तनुम भक्त्या, जिसको जिस देवी देवता को सामने बोलेगी आई लाइक दुर्गा माँ, संगीता माता जी बोलेगी आई लाइक काली माँ, so somebody else will say no I like Ganesh ji, someone will say I like Shiv ji, I like this ji, that ji, okay, including Parle ji, every ji. But Lord is saying, yo yo yam yam tanum bhaktya, श्रद्धयाम अर्चितम इच्छति, wants to do very sincere devotion, श्रद्धा से भक्ति करना चाहता है. कि देवता भक्ति भी लोग बहुत श्रद्धा से करते हैं. आप कभी जाओ सोमवार मंगलवार को जाओ हनुमान जी का मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में, माय गॉड, हाउ मेनी पीपल कम टू टिटवाला ऑन अंगारिका डे? Lakhs, right? It is said if you go to टिटवाला on अंगारिका डे, जो आदमी सुबह सुबह 3 बजे जाके खड़ा होता है लाइन पे, सॉरी रात को 2 बजे जाके, रात को 12-1 बजे जाके लाइन में खड़ा होता है, सुबह 5 बजे उसको फर्स्ट दर्शन मिलता है, बाहर आता है, तुम उसका दर्शन कर लोगे, तुमको गणपति का दर्शन मिलता, भाव मिल जाता है. इट इज सेड दैट इट इज सो टफ. Here also I know people standing in Siddhivinayak line for hours. People do walk from here to Siddhivinayak and they stand, that too especially on Tuesdays and special days, you know, Angarika and all the Chaturthi and all that. It's crazy crowd. Crazy crowd. So it's not easy. वो भी तपस्या है, इतना मुश्किल से वहां तपस्या करके आपको वहां करना है, बट स्टिल लॉर्ड इज सेइंग वो श्रद्धा जो है, definitely somebody is standing in the line for 2 hours, it's painful, it's torturous, but still he is determined. Why? क्योंकि उसको श्रद्धा है और ऊपर से काम भी है. काम मतलब डिजायर, मेरा काम होना है, पास होना है, पढ़ाई किया नहीं, एग्जाम में लिखा नहीं, तो गणेश जी अभी आप ही सहारा हो, पास करा दो. तो ये सब जो चक्कर है, तो गॉड इज सेइंग तम तम सॉरी यो यो यम यम तनुम भक्त्या श्रद्धाम अर्चितम इच्छति, तस्य तस्य अचलम श्रद्धा. अचल श्रद्धा, अचल श्रद्धा मीन्स जो श्रद्धा हिलती नहीं है. यू गो एंड प्रीच टू हिम, ए गणपति छोड़, शिव जी के पास आ, नॉट नो गॉड, आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी डिफरेंट. हनुमान जी के पास जाओ, हनुमान जी वाला कभी गणेश जी के पास नहीं आएगा, गणेश जी वाला कभी हनुमान जी के पास नहीं आएगा, और ये दोनों वाला शिव जी को गाली देगा, शिव जी वाला ये दो को गाली देगा. तुम बेटे के पास जाते हैं, हम बाप के पास हैं, गणेश जी का बाप है ना, क्योंकि फादर ऑफ गणेश जी. सो दिस इज हाउ. एंड कुछ लोग बोलेंगे हम पार्वती देवी का करेंगे, दुर्गा का करेंगे, क्यों माँ है गणेश जी. अरे बाबा, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, नथिंग इज सेपरेट, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. बट द प्रॉब्लम इज श्रद्धा अर्चितम इच्छति, तस्य अचलम श्रद्धाम ताम एव विद्याय हम, मैं ही उसको दे रहा हूं श्रद्धा. टू स्टैंड इन द लाइन फॉर 10 hours टू टेक द दर्शन, माइट बी ही मस्ट बी ए क्लास ड्रंकर्ड, मतलब फॉर हिम ड्रिंकिंग इज लाइक इम्पॉसिबल, ही कैन नॉट लीव ड्रिंकिंग, कैन नॉट लीव नॉनवेज, बट कम से कम वो मंगलवार का दिन नहीं खाएगा, सोमवार का दिन नहीं खाएगा. व्हाट इट इज, what a so called tapasya he does because of the shraddha, and the shraddha I only. So so verse number 22, we take 23, we have to start now, so we'll complete 22 and then take 23. Just we will review yuktasya tasya aradhyam ihate labate te tat kamam mai eva bhitan hitan, is endowed with that such faith. पहला चीज, कोई भी चीज काम करने के लिए पहले क्या होना चाहिए? फेथ. फेथ के बगैर कुछ काम नहीं होगा. पास भी जाना है, यू नीड फेथ. वी गो विद द डॉक्टर, क्या मुझे मारेगा, यू कैन नॉट स्टिक विद द डॉक्टर. नो, डॉक्टर ने क्या लिख के दिया मेरा, सो यू कैन नॉट. सो व्हाट यू हैव गॉट टू हैव? फेथ होना चाहिए. तो endowed with such faith, and he endeavors to worship the particular demigod and obtains his desires. अच्छा, मिल भी जाता है. कैसे मिल जाता है?
भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, गणेश जी बोलते हैं अच्छा 16 सोमवार कर रहा है, 16 मंगलवार कर रहा है, जो भी कर रहा है, हर आता है, चलो इसका मैं थोड़ा उद्धार कर देता हूँ, जा मैं उसको दे देता हूँ. बट एक्चुअली ही सेज द पर्टिकुलर डेमिगॉड डजंट हैव द पावर. उस देवी देवता के अंदर ताकत भगवान ही दे रहे हैं. उसका भी बॉस तो होगा ना. ये समझो आपको बैंक मैनेजर ने या बैंक के ऑफिसर ने आपको कुछ आपका लोन पास करा दिया, जो भी करा दिया, एक्चुअली हु हैज गिवन हिम द पावर? उसको वहां बिठाया उसके बॉस, तभी वो बैठे वो काम कर रहा है. तो सेम वे the demigods obtain the person obtains his desires, but in actuality these benefits are bestowed by me alone. Hitan मैं ही दे रहा हूं. बट उसको क्या लगता है गणेश जी दे रहे. इसका मतलब क्या है? लेट्स से यू गो टू ऑफिस, वर्क 30 days. ठीक है, आज का जमाना अलग है. आपका आरटीजीएस में अकाउंट में पैसा आता है, एवरीवन गेट्स सैलरी ऑन अकाउंट. बट एक जमाना था व्हेन सैलरी यूज्ड टू बी गिवन इन हैंड. देयर यूज्ड टू बी बिग अकाउंट. एक आदमी पूरा गनमैन के साथ जाता था बिग बिग कंपनीज में, बिग बिग फैक्ट्रीज में विथ ह्यूज कैश, एंड सबको आपका 2000, तभी 2000 बहुत बड़ा पगार हुआ, 2000. तो ही यूज्ड टू गिव इन कैश. तो इमेजिन समवन इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वो सिंसियरली काम कर रहा है और हर 30 तारीख को मिस्टर XYZ आते हैं और उसको कैश में पगार देते हैं. थोड़ा दिन बाद he comes to a conclusion that this person only is the मालिक. यही मालिक रहेगा, पैसा यही दे रहा है. Every week he comes and gives me money. That means he must be the main boss or main owner. But he is actually an employee who is working for the boss, and for this work he is also getting paid the salary. He is also getting a salary for doing this. Paying salaries to others is his job, and for which he gets a salary. So if someone concludes that as correct, how do you think it is justified? Is it justified? Will you call him an intelligent person? You will not call him intelligent, right? That is what Lord is saying in the next verse. अंतवंतु फलम तेसाम तद भवेत अल्पमेधसा देवान देवजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि. इस श्लोक में दो लोगों के अंदर का जो भ्रम है ना, खाली कर रहे हैं. दो भ्रम. भ्रम 1, अंतवंतु फलम तेसाम. अंतवंतु फलम तेसाम, जो फल उन लोगों से मिल रहा है देवी देवताओं से. Just like example, you work for 30 days and you got the salary cover, जो भी आपका पगार मिल गया, बस हो गया. बस हो गया, आगे पैसा चाहिए कि नहीं. तो ये फल कितना है? अंतवंत. बाय द एंड ऑफ द मंथ, 30 तारीख तक कवर खाली है ना. पगार खत्म, अकाउंट खत्म, अकाउंट खाली. अरे कब 1 तारीख होगा, कब पगार आएगा, और ये महीने का मतलब इट इज. माय फ्रेंड यूज्ड टू नाइसली से, ही यूज्ड टू वर्क फॉर द रेलवेज अर्लियर, ही इज स्टिल वर्किंग. ही यूज्ड टू से वेरी नाइस जोक. फर्स्ट वीक इज गोल्डन वीक, second week is silver week, third week is copper week, and the last fourth week is iron week. Very weak, very weak. Oh, he will wait, कब एक get his salary. So what does this mean? ये फल जो मिला है वो अंतवंत है. अंतवंत मतलब खत्म हो जाता है. It gets over, and when it gets over, the main something more, and same thing happens with also. Now, so let's say someone plays into some devata iPhone से 18 आ गया क्या? अभी 17 दिला दे. ठीक है, बेचारा 1 साल
व्रत व्रत किया, सब किया। गणेश जी ने बोला हाँ ले ले जा आईफोन। जैसे लेके आया नहीं आईफोन अनाउंस, आईफोन 18 लॉन्च्ड या 19 लॉन्च, व्हाटएवर इट इज। देन अगेन आफ्टर 2 years वापस चालू, तो लेटेस्ट फोन चाहिए, लेटेस्ट टीवी चाहिए, लेटेस्ट कार चाहिए, व्हाटएवर इट इज, इट्स अ परपेचुअल। इट्स लाइक जैसा उस व्यक्ति को हर महीना सैलरी लगता है, whatever you get from the Devi Devatas, materially, it is, one is temporary. Let's say someone gets 10,000 crores, like 50 Mataji might get 10,000 crores lottery. You say, no, Prabhuji, this amount I can live full life. And I don't, मतलब ये अंत होगा ही नहीं, मेरा अंत हो सकता है मगर अमाउंट का अंत होगा नहीं। दैट इज द पॉइंट ना, आपका अंत एक दिन हो जाएगा, बाकी का छोड़ के जाना पड़ेगा। You can't take it forward to the next birth. That is also an understanding of antu to phalam tesam. Why those fruits are finite, perishable? Because they will perish after some time. They will perish after some time, and you cannot do anything for that. And the reason why they are perishable is they are not given by God. That is desired by you. That is desired, because our desire is always limited. हमारी सोच, हमारी limited है. We don't know how to ask and what to ask. Suddenly God comes here. Yes, Priya, what do you want? What will happen? Priya will say, one minute, I got a list. Oh, I want this. हाँ ठीक है, अगर फ्रस्ट्रेटेड मूड रहेगा टेक। अगर फ्रस्ट्रेटेड नहीं, वर्ल्डली डिजायर में है, काम में सही थे, वो सिचुएशन पे है, तो यू विल से यस आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। बट अ ट्रू डिवोटी अंडरस्टैंड, आया तो ठीक, नहीं आया तो नो प्रॉब्लम। हु डजंट वांट? अगर कोई आपको आके दे रहा है, 10 रुपया भी दे रहा है, आप बोलेगा नहीं मत दे, जो भी आ रहा है आने दे, 100 रुपया, लाख रुपया, 1000 रुपया, जो भी आना दे। नहीं आया ठीक है, ये हरी इच्छा, ये प्रभु की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है, नहीं आया नो प्रॉब्लम। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, whatever is happening by God's desire. And अंतमंतु तो फलम से तद्भवेत अल्पमेधसा, ये अल्प बुद्धि वाले है ना, उसी को अपना अल्टीमेट समझते हैं। But in the starting of the lecture, what we said, we are not against Devi Devata, but उसी को all in all समझते जो बैठ गए। अब यार मैं अगर देवी टेम्पल में नहीं गया तो मेरी बेटी का शादी नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। It's a very beautiful understanding in this shloka with respect to Sundarkand. There's a very beautiful thing. When he killed so many asuras, Hanumanji killed so many asuras. He killed Akshay Kumar also. Meghnad came. Indrajit came and he tied him with Brahmastra. He also respected Brahmastra. Tie karega. So he also respected it and got bound, so-called bound. Will work on you. He got bound. And it was idiotic, foolish Rakshasas. They said, बांध दिया ना, अभी भरोसा नहीं, ये ब्रह्मास्त्र कैसे कहीं छूट के निकल गया तो। He's been bound nicely, but if he breaks it, he's a very powerful monkey. He will tie some ropes. So what he did, the asuras did, they bought some nice thick rope and tied it around his leg and hand and body. Brahmastra felt, how insulting, how very insulting, huh? मैं यहाँ यही ब्रह्मास्त्र, उसमें उससे कोई बड़ा अस्त्र नहीं है, मैं उसको बांध के रखा है, एंड दिस फेलो, these fools are getting, I am going. It is Brahmastra immediately went away, and this fellow just like coolly broke all the ropes, but deliberately he was bound because he wanted to have the audience of
रावणा, ही वांटेड टू सी रावणा, इसके लिए वो अपने आप को बंधवाया उसने, he allowed himself to be bound. So the point what we understand from this, अगर अल्पमेधसा कहने का मतलब और एक है, भगवान बोलते हैं जरा इसको अक्ल नहीं है, अभी भी देवी देवता का चक्कर मार रहा है, हाँ? जब मेरा शरण ले लिया है, मेरा शरणागति लिया है, आचार्य से वेरी नाइस, स्पेशली द वर्ड्स दे से वेरी नाइसली, अभय हस्त है, पर प्रधान, अभय हस्त, डोंट बी अफ्रेड। कोई भी आप विष्णु टेम्पल में जाओगे वो विष्णु ऐसे दिखेंगे। व्हाट डज दिस मीन? अभय हस्त का मतलब डोंट बी अफ्रेड, इसके अलावा कुछ मतलब है? अच्छा, वेरी नाइसली, अभय हस्त मतलब बस एक बार सरेंडर हो गया ना, बस हो गया। यू डोंट हैव टू रिपीटेडली सरेंडर टू मी, बट दैट सरेंडर हैज टू बी फ्रॉम हार्ट। इट्स लाइक मैं आपकी हूँ, मैं आपकी भी हूँ, मैं आपकी भी हूँ, हम कहीं के हैं, ये मंडे टू संडे के कहीं के हैं नहीं, हम एक के ही हो सकते। वी कैन सरेंडर टू ओनली वन। तो अभयहस्त, व्हाई लॉर्ड इज सेइंग अभयहस्त, बस डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, यू सरेंडर्ड वंस टू मी ना, डोंट वरी, यू आर सरेंडर, आई विल टेक केयर। दैट इज द कैलिबर ऑफ और कैपेसिटी ऑफ गॉड। भाई आप एक बार सरेंडर किए, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग more. But when he sees just for some एक गाड़ी, बंगला, शादी, बच्चा, this and that, small things के लिए गया देवी देवता के पास, तो भगवान भी बोलता है ये बुद्धि है, अल्पमेधसा है, इसके अंदर अक्ल नहीं है, इसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, he is not smart. You may be laborious in devotion, but you got to become smart in devotion. Many a times people appreciate to be laborious. No. Very important, in depth I am talking with respect to understanding. Many people think, ये तपस्या कर लिया, एकादशी का तपस्या कर लिया, या ये सेवा कर लिया, वो कर लिया. So laboriousness is not just one focus in devotion. That has to be with Shraddha, faith, with total surrender to God. Then it makes a difference. Otherwise, just being laborious also is alpamedasa. That is why Lord is saying. Then the most important point. कितने लोग यहाँ मानते हैं? अपेक्षा, डू यू एग्री? किसका भी पूजा कर लो, सब एक के पास ही जाने वाला है ना? अग्री? और कोई है इसके साथ? हाँ, अंजना माता जी, आप कोई भी स्वरूप में कर लो, सब भगवान के पास ही जाने वाला है ना, सब भगवान के अंश है ना, है कि नहीं? कल ही सुना है ना, मम्मी बच्चे जीव भूखे जीव भूत सनातन, हाँ, आप भी भगवान का, देवी देवता भी भगवान के ही अंश हैं, तो वो भी उधर ही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? आप या प्रभु जी, आपको क्या लगता है? आप किसका भी पूजा कर लो, आखिर में एक ही के पास जाते हैं। अग्री? नहीं, आप हाँ, तो बोलो एंड में अगर मैं बोलूँ नहीं, आप यू डोंट अग्री, मतलब नहीं, एक अगर बहुत किधर भी किया, किसी से भी किया, सोमवार वाला, मंगलवार वाला, बुधवार वाला, गुरुवार वाला, शुक्रवार वाला, एंड में वो एक ही आदमी के पास जाएगा और वो है भगवान। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दोज हु मेक दिस स्टेटमेंट, दे डोंट नो हु इज भगवान. That is why they are making this statement, because they themselves don't know who is that भगवान. सेकेंड, याद रखना, आप एयरपोर्ट में जाके कोई भी प्लेन में चढ़ जाओगे, रेलवे स्टेशन में जाके कोई भी ट्रेन में चढ़ गया, आपको जाना है दिल्ली, चेन्नई पहुंचा देगा,
जाना था इधर कश्मीर जाना था, कोलकाता पहुंच जाएंगे। हाँ, वो भटकता रहेगा, क्यों उधर भी वो कोई जोट नहीं मिला, उसी पड़ गया ना, मालूम पड़ा वापस आ गया, वापस इधर ही आ गया, बट ही इज नॉट सीइंग विच इट इज, ही इज जस्ट बोर्डिंग इट जस्ट बिकॉज ही इज ऑन दैट थॉट प्रोसेस कि जो भी करो तो भगवान को जाने वाला है, नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई लॉर्ड इज वेरी स्पेसिफिक इन दिस वर्ड्स। ये अल्पमेधा लोग जो हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं कि भाई आप किसका भी पूजा करो, सब एंड में एक के पास ही जाने वाला है, तत्व में सही है बट ज्ञान में कम है। अगर आपको तत्व में करना है तो पूरा ज्ञान से आपको करना होगा, और जो व्यक्ति ज्ञान में आ जाएगा, वन हु इज इन फुल नॉलेज विल नॉट डू दिस मिस्टेक। हाउ मेनी पीपल लाइक हॉपिंग फ्लाइट्स? नॉन स्टॉप फ्लाइट्स नहीं है, स्टॉप, लाइक stop over, go. How many of you like, right? Sit in that 1 hour like that, sitting like an idiot. So what does this mean? If you are doing, किसी का भी भक्ति कर लो, वहीं जाएगा, माइट भी जाएगा, कई जन्म लग जाएंगे, hop over, you will be hopping somewhere over, staying over for few hours, and स्मैक बैग हो गया तो और लेट हो जाएगा। तो दिस सेड, जो भगवान की भक्ति करता है या जो भगवान को प्यार करता है या भगवान की सेवा करता है, वो भगवान के पास जाता है। जो देवी देवताओं का पूजा करता है वो उनके लोकों में जाता है। देयर इज अ लोका फॉर दुर्गा, यू नो दैट, देयर इज अ लोका फॉर शिवजी, देयर इज कैलाश, सेपरेट कैलाश लोका फॉर शिवजी, नॉट दैट, इसका कैलाश नहीं है अपना, है वो कार्टून, ना नित्यानंद इडियट, हाँ कैलाश, हाँ उसका वो वाला नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल कृष्णा, आई मीन एक्चुअल शिवा हैज गॉट अ लोका कॉल्ड कैलाश लोका, दुर्गा हैज गॉट इज दुर्गा लोका, ही इज देयर इज अनदर लोका, सेपरेट लोका, दैट इज व्हाई लॉर्ड इज स्पेसिफिकली मेंशन, देवान देव यजो यान्ति मद भक्त्या यान्ति मामपि, मेरे भक्त मेरे पास, और देवी देवताओं का भक्त उनके पास जाएगा या उनके लोक में जाएगा। दैट इज हाउ वी कम टू नो मार्कंडेय चेंज्ड पार्टी, सेज मार्कंडेय, सेज मार्कंडेय वाज बेसिकली शिव भक्त, दैट इज व्हाई ही वाज टॉट द महामृत्युंजय मंत्र जप करते थे, एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर दैट हिज लाइफ वाज वेरी शॉर्ट, 12 साल का उम्र में उनका मृत्यु था। जब which temple I told, remember? उत्तरकाशी किधर? काशी विश्वनाथ टेम्पल एट उत्तराखंड, उत्तराखंड में काशी विश्वनाथ टेम्पल है, वहां पे भी एक विश्वनाथ टेम्पल है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, दैट इज इन उत्तराखंड। उस जगह पे मार्कंडेय ऋषि went there and he was chanting the Mahamrutyunjay mantra and Shiv mantra, and that is the time when Yamraj came and put the noose, and the noose fell both on him as well as on Shivji, and he held Shivji so tightly, आज भी वो शिवलिंग bent है, it is not straight, it is bent, and अभी भी वो रस्सी का मार्क वो शिवजी के ऊपर भी है, शिवलिंग के ऊपर है, so he was holding it, then Shivji came, hey you can't take him, how, you only told 12 years, I said 12 years but 12 devata years, years of devatas, not human life. Yamraj also went quietly, then after a few years मार्कंडे बिकम वेरी क्लोज ना, एकदम 1-to-1 शिव जी को देखा तो क्लोज हो गए, तो उन्होंने पूछा मुझे आप थोड़ा लिबरेशन दे दो। इमीडिएटली व्हाट डिड शिव जी से, सॉरी दैट इज नॉट माय डिपार्टमेंट, यू विल हैव टू नो कांटेक्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट। ही सेड हु इज द कंसर्न डिपार्टमेंट, गो एंड मीट हु, विष्णु। दैट इज व्हाई इन भागवतम द 11th canto there is a very beautiful story where Krishna goes and gives darshan to Markandeya. People ask him, show me your Maya. आपकी माया का दर्शन। You want to see my Maya? Krishna said, you want to see my Maya? I'll show you Maya.
And immediately he says a full flood coming and everything is inundated and he is floating in water, kabhi upar to kabhi niche, kabhi pani ke andar, confused. And there he sees God in the Vatapatra Shahi. नो वट का पत्र पे भगवान लेटे हैं और अपना अंगूठा चूस रहे हैं एंड ही सीज दैट एंड ही सीज बिग बिग शार्क्स उनके मुंह में भी जाता है बाहर निकल रहा है लाइक मीनिंगलेस ड्रीम you see. And after thousands and thousands of years, he finally prays, God, enough of your Maya, please end this Maya of yours. Immediately, he opens his eyes and he sees he is in that same place in Badrikashram, and there he is sitting, and everything is normal as it was when it started. For billions of years he was doing. So that is how he became Vishnu from Shiva. So that is why to be a demigod worshipper is not wrong, is not bad. It is better than to be an atheist. But that is not the ultimate category. The ultimate category is one who becomes intelligent. वो काम के हिसाब से देवी देवताओं को पूजा करता है वो तो माय क्वेश्चन हियर इज काम के हिसाब से मैं भगवान का भी पूजा कर सकता हूँ इंटेलिजेंट क्यों नहीं करे ओके टेम्परेरी है ठीक है बट फिर भी यू नीड नो भाई आज some things are no longer a luxury now it has become basic अभी नेसेसिटी में आ गया now mobile phone right from a beggar to a rich man okay he may use Tesla's phone and a beggar may use an ordinary button phone but everyone requires so today what is the luxury tell me everything is basic everything is basic requirement might be you will require a nice branded dress that person may require a less branded dress so how do you understand that yes दामी मदद बताइए I am asking now desires are there or I got you must have some n number of material desires for that should we trouble God or should we go to Devi Devatas or by going to God are we intelligent with those desires okay we can ask for if he feels right he will give you fine that's good something more yes भगवान आपने को आपको दिया है x और आपको x प्लस 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 but you will not get the desired good nice okay hmm. But if we still go to him for desire and finish doing it, then for him directly थोड़ा भी काम का सब होता now I'm not I don't need to come to you ना if you've done a little bit and then you're taking in this okay fine something more somebody else would like to add like Vaishali would like to add something Nikita Mataji would add मोक्षदाम उधर ठीक है no please understand one who first puts his mind and heart of God makes all arrangements for his survival as well as for his moksha that is the first condition of surrender अनन्यस्यन्तस्तमाम ये जन परिपश्यते तेषां नित्यम अभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम इस पे भरोसा होना you should have faith by if he is not giving fine no problem if he is giving fine you endeavor in the service but
What happens, what comes, let it come with its own accord. Secondly, people generally change their lifestyle with respect to income. अब ज़्यादा आने लगा, थोड़ा मैं ज़रा स्टाइलिश रहता हूँ, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन में रहता हूँ. देन सम पीपल जैसे अभी ये इसलिए शेयर मार्केट वाले, market down, they are also down. Market is up, they are also up. No, just for shopping, they will go to Dubai. So, what does this mean? What does this mean? Always one who is surrendered to God. Whatever, everyone is somewhere. किसी को करोड़ है, किसी को करोड़ है, किसी को लाख है, किसी को बहुत कम है, but है. Nobody is a beggar. Listen, in the general category, no one is a beggar. That means as per past karmas, everyone has been blessed. As per past karmas, everyone has been blessed. As per capacity, as per your karmas, your God might be someone has a house in Nepensi, someone has in Juhu, someone has a house in Borivali, someone has in Parla, someone has in Goregaon. All these are, but Sukhi koi nahi. Please remember this. Sukhi koi nahi है. Because क्यों दुख दिया गया है? Because हमको तभी भगवान का स्मरण आएगा. सुख में कभी स्मरण नहीं आएगा. If you are in a deemed happiness means an happiness which is not existing, but you are deeming it as happiness. They are अल्पमेधसा, अल्प बुद्धि वाले हैं, and उनका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता. Because they are in their heart, never will devotion raise the love and God, love towards God or devotion never arises in their heart. So what do we do for that? It is always said, you do as with whatever God has given you, resources, whatever God has given you, you start your devotional service. Do your service for God, and things will fall in its place at the right time. Because everyone, not only you, your family members are also coming with their own set of karmas. You should not forget. Every family member comes with his own set of karmas. You can't decide, I want my child to become a doctor. उसके कर्म में है तो वो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा. So when a person comes, he should have a faith. No, okay, everyone has got his own set of karmas. Let me endeavor for my own set of karmas. What I get, fine. If I don't get, fine. And for sure, Lord makes things ready and happy for him. He makes him happy. Happy in the sense, he has to find happiness in things given to him. But he tries to find happiness in his own way. Your own formula of happiness will not work. Your formula of happiness will not work. Your formula of happiness is different to the formula of happiness which Lord has planned for you. Lord has his own plans, he has planned for you. So you have to do your devotion and wait for the results. The wait for the result, the way God gives. Shabri, so many years she waited. So many years she waited to her house. One day, 1 hour, that's it. But that is it. पूरा जीवन का जो तपस्या किया, वो तपस्या का फल 2 मिनट में मिल गया. Similarly, do your devotion and have the faith. That is why Lord is saying, Mad Bhaktya Yanti Mamapi, they will come to me for sure. Another confirmation Lord is giving in the Gita. भाई मत भक्तों यांति मामपि, मेरे पास आएंगे और देवता के भक्त देवता के भक्त, और देवता का भक्त में पुनरपि का नाम पुनरपि. और भगवान के पास जाने का फायदा क्या है? बस, there is no repeated cycle of birth and death.